खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं उनमें विश्वास है, मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश। Hello everyone, a warm welcome to everyone who is on this call and joining us live on YouTube as well. तो हम ये सेशन को थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखेंगे, तो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब समझने के लिए भी। So I would like to welcome everybody on behalf of Vikas Samvad and the knowledge and communication team of Nutrition Smart Community. This year, the year 2023 is a very special year for us. It's declared as the International Year of Millet as well. So the mighty millet that we all know, हम ये जो millet पोषक अनाज या मोटे अनाज जो हैं वो काफी ज्यादा पौष्टिक होते हैं and climate resilient भी रहते हैं, तो वो एक traditional crop है इंडिया के लिए। तो हम बहुत सारे we know a lot of millet. I think we're all familiar with the popular ones, ज्वार, बाजरा, कोदो, ये कुछ common famous millets हैं, शायद हम सब लोग बहुत टाइम से जानते हैं इनके बारे में। And the potential of these great mighty millet is they even align with several United Nations Sustainable Development Goals as well. So आज के इस टॉक में हम थोड़ा सा और मिलेट्स और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, बल्कि और भी सारे उसके जो डिमेंशंस हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे. So today we have with us Padma Shri Dr. Khadar Vali with us, and so before we go ahead, हम थोड़ा सेशन और चालू करें उससे पहले I would like to mention that this talk is a very special one because we are collaborating with the Women and Child Development Department of Madhya Pradesh, who are putting continuous efforts on the ground to promote the consumption of millet. So ये talk
किस में टॉक में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के साथ, जो निरंतर काम कर रहा है ग्राउंड पे मिलेट के प्रमोशन और कंजम्पशन को लेके। तो अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक मिलेट कुक बुक भी रिलीज करी थी, ताकि हम एनकरेज कर पाए मिलेट्स को अपनी डेली डाइट में भी। तो हमारे साथ अभी कॉल पे, सो टुडे वी हैव विद अस ऑन द कॉल मिस्टर सुरेश तोमर, द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। We will hear a little more from him अभी आगे चल के। So हम एक और initiative जिसका नाम है भूमिका, we're also collaborating with another initiative, BhoomiKa, which is an initiative that enables clean, green and fair relations between food producers and consumers. तो हम भूमिका के साथ भी इस कॉल में जुड़े हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करा है। तो ये जो आज का कॉल है वो एक पावर टॉक सीरीज करके चल रहा है। So this talk is a part of the power talk series that is being hosted since 2021. So it's been 2 years. So I would like to invite Philip, the program advisor of Welthungerhilfe, to share the idea of power talk and the knowledge management initiatives under this. Hi, hello, am I audible? Yes, yes. Thank you so much. Yes, thank you very much, and a welcome and a warm welcome to everybody online. Thank you so much for participating today at our Miracle Millet Power Talk. A special welcome also to Dr. Khadar Vali. It's an honor to have you here. Thank you so much for joining. I think, I'm not very sure, Shri, it's the third or the fourth power talk we are organizing under the umbrella of the Nutrition Smart community. It's great that this power talk is organized in collaboration with other networks, other initiatives, including the Department of Women and Child Development. So I'm very glad that we could extend our network. The Nutrition Smart community, by the way, is a global program initiated by Welthungerhilfe and multiple partners to scale an integrated multi-sectorial approach to address malnutrition in Asia, but also in Africa. And I'm very pleased that we can contribute today, yes, among many others, with this power talk in launching the International Year of Millets 2023, which was actually proposed by the Indian Prime Minister a couple of years ago, I think, and then it got approved and then finally declared by the United Nations. So India plays a special role when it comes to millet, and I'm very happy to see that India could already establish itself in recent years as a real global millet hub. Yeah, India is a millet champion, I would say. The Millet Hub already has generated many pilots, best practices, research, technologies, and so on in India. So we are not starting from the scratch. Yes, like you said, Shreya, millets are indeed a miracle grain. We will hear more about it later. Millets can play a key role in shaping our sustainable future, in changing the world, like Dr. Khadar Vali says, due to its multiple benefits. I think we all know millets are highly nutritious. That's nothing new. They are rich in vitamins, they are rich in minerals, they are rich in antioxidants and so on. And furthermore, millets require less water than other crops. Millets are able to grow in difficult climate conditions, such as very dry and arid regions. And that makes it a very important crop for millions of smallholders, not only in India, but worldwide, who are now facing the very negative impact of climate change. Yeah. Another benefit of millets is the contribution to biodiversity. I mean, unlike modern agriculture, which often relies on monoculture crops,
millets can be grown in diverse integrated farming systems, promoting therefore a much healthier and more balanced ecosystems. Millets were among the first cultivated crops in the history of agriculture, so far I know. And we still have today, I think, around, I mean, maybe even more, 6,000 varieties throughout the world, with each single millet, and that's amazing, having its own unique flavor and its own nutritional profile. Last but not least, the production of millet can support the livelihoods of many smallholders, and could provide decent jobs for women and youth when it comes to post-harvesting, when it comes to processing, but we will hear about it later. Millets also require less investment in terms of inputs like fertilizers and pesticides, and they have a shorter growing cycle, which means you can grow multiple crops in a year. As civil society, we have promoting millets for years, not only to address malnutrition, but also to create sustainable local food systems. The International Year of Millets provides us now with, I think, a unique opportunity to revitalize this important world food heritage, and to scale our efforts with rural communities, with the government, food startups, and other important stakeholders of the millet value chain. Millets are produced and consumed in actually over 130 countries. So I hope that we can also use the International Year of Millets to connect and to collaborate with other countries, and to create not only an Indian people's movement, but a global people's movement for more resilient, sustainable food system, embracing the wonderful diversity of traditional and local available food crops we have on our planet. So thank you very much. And yes, don't forget to include millets in your own kitchen. Yeah, sometimes we forget about that. It's not always happening. Yes, I give back the word to you, Shreya. Thank you. Thank you very much, Philip. Truly an enlightening talk from you. I would also like to invite Mr. Suresh Tomarji, who is the Joint Director of the Women and Child Development Department. So Suresh sir, अगर आप भी थोड़ा सा inaugural address हमारे लिए करें इस talk के लिए. नमस्ते. शुक्रिया श्रेया. नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं WHH को और विकास संवाद को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये पावर टॉक मिलेट्स और उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो पोषण है, उसके संबंध में आज किया है. देखिए, हम लोगों का मैं चूंकि इस विभाग में काम कर रहा हूं, पोषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में और जन सामान्य के स्वास्थ्य में भी सुधार हो, उनका पोषण का स्तर ठीक हो. मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूं व्यक्तिगत तौर पर, मेरा जन्म जो है ना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ है और हम जहां रहते थे तो मैंने बचपन में के बहुत लंबे समय तक हमारे इलाके में, हमारे खेतों में ज्वार और बाजरा होता था, जो बहुत महत्वपूर्ण मिलेट है. लेकिन बाद में क्या है कि जैसे ही गेहूं और चावल हमारे जो भोजन की जो आदतें हैं उनमें शामिल हुआ और उसके बाद फिर वो धीमे धीमे हम उसको ऐसा मानने लगे कि ये जो है कि एक तरह से ये भी था कि गरीबों का भोजन है और उसके प्रति किसानों के मन में भी जो एक रुझान था वो भी धीमे धीमे कम होता गया और गेहूं, सरसों, दूसरी पैदावारें बढ़ती गई और ज्वार और बाजरा पीछे चला गया. तो और उसका सीधा सीधा असर जो है ना स्वास्थ्य पर दिखने भी लगा, लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा. और अब हम लगातार, हम जिस प्रदेश में हैं उसका चाहे हम IIMR देखें या MMR देखें या पोषण का जो भी स्तर है वो देखें, तो हम मध्य प्रदेश काफी नीचे आता है. तो अगर हम मिलेट्स पर बात करते हैं और मिलेट्स को अपने भोजन की जो आदतें हैं उसमें दोबारा से शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गुणात्मक परिवर्तन आएगा.
और मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ और हम सब लोग के डॉक्टर खादर वाली हमारे बीच में हैं और जो कि बहुत विशेषज्ञ हैं इस विषय पर, और वो आज हम लोगों से बात करेंगे, हमें गाइड करेंगे। निश्चित रूप से जो इंसाइट मिलेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको आगे हम किस तरह से आईसीडीएस के प्रोसेस में किस तरह से शामिल करना है, इस पर भी बात करेंगे। एक जरूर है, ये बात की जानकारी बहुत सारे लोगों को मैं आपको पुनः देना चाहूंगा कि डिंडोरी जिला है जो मध्य प्रदेश का, वहां पर कोदो और कुटकी होता है जो कि मिलेट है और बहुत महत्वपूर्ण मिलेट है मध्य प्रदेश का। और उसको हमने एक दो परियोजनाएं वहां पर शुरू किया है और हम लोगों ने जिस तरह से न्यूट्रिशनल लेवल है उसका जो असेसमेंट किया है उसमें भी पाया है कि उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। जो सैम और मैम बच्चे हैं, महिलाओं का, गर्भवती और धात्री महिलाओं का जो पोषण का स्तर है उसमें गुणात्मक सुधार आया है। तो निश्चित रूप से आज की जो पूरी बातचीत है हम इसको यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित भी कर रहे हैं, हमारे कुछ अधिकारी और फील्ड का कुछ स्टाफ उसको देख रहे होंगे, और आज जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसको हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पुनः प्रतिभा से अनुरोध करेंगे कि आप जो है ना एक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर्स के साथ जो फील्ड स्टाफ है उनके साथ हम पुनः इस पर बातचीत करेंगे और किस तरह से पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है तो हमको प्रमोट करना है, और दूसरा ये है कि हमको अपनी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, तो इस पर हम निश्चित रूप से बात करेंगे। और अभी हमारा केवल एक या दो परियोजनाओं में हम जो टीएचआर दे रहे हैं वो मिलेट बेस्ड है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी बाकी जो परियोजनाएं हैं उसमें भी हम इस तरह का टीएचआर प्रोवाइड करें, हॉट कुक मील प्रोवाइड करें जो मिलेट बेस्ड हो, जिससे हमारे बच्चों और जो गर्भवती और धात्री माताएं उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस विषय पर, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत शुरू की है। ये इससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। मुझे लगता है मिलेट इस पूरे वर्ष में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान लेगा हमारे पूरे प्रोग्राम और मध्य प्रदेश में, जैसे आप बोल रहे हो। तो लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हम और करेंगे इसमें। तो अभी और थोड़ा सा मिलेट को जानने के लिए, सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर खदर वली। So before we introduce him, I would like to invite Nivedita, the country director of Welthungerhilfe India, to share her thoughts on millets and also introduce our speaker for this talk. Thanks, Shreya. So I will not share my thoughts on millet because I think everyone is waiting for Dr. Vali, but I will only briefly introduce him. I think a lot of people know Dr. Vali by now. He's a renowned independent food and health scientist who dreams of a healthy and sustainable society. And he is popularly known as the Millet Man of India. So just a little bit about his background. He did his PhD in steroids from the Indian Institute of Science, Bangalore, and he worked as a scientist at CFTRI. He did his postdoctoral from the US, and then he later worked there for 5 years. And then he returned to India in 1997 and settled in Mysore because he felt that working for a healthy society at home was more meaningful than working in a foreign country, especially in the face of commercialization of food, which was going on a lot, which is still going on. So his motto is, health is the ultimate wealth. And he has been educating people about millet for health. He has been helping farmers learn about cultivation methods organically. He's been engaging with agriculture scientists and policymakers to promote millets to save soil, water, environment, and of course, human health. So he particularly talks about 5 positive millet grains, the Shri with the healing properties, and these are the millet grains that are fast disappearing from India. And of course, he was recently awarded the prestigious Padma Shri for his extensive work with food grains over the last 20 years. So I'm sure everyone is really keen to hear him now. So I will hand it over to Dr. Vali now. Over to you, Dr. Vali. प्रणाम, सबके लिए प्रणाम। हम एक माया जाल में फंस गए हैं। ये माया जाल
वेस्टर्न पाश्चात्य अंधाकरण से हो रहा है। अभी भी हम फिलिप बात किया है कि ये कुपोषण हमारा वुमेन के साथ हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, एशिया में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। बात यही है कि यूरोप, अमेरिका, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा कुपोषण है। दे आर द मोस्ट malnourished people। ये विज्ञानी तज्ञ लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये मायाजाल, साइंस का मायाजाल, ये बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री का मायाजाल, ये सब साइंटिफिक जर्नल्स यहाँ पाश्चात्य अनुसंधान से होता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं वही साइंस है। Absolutely, there is no sign in what we have been doing for the last 70 years. ये न्यूट्रिशन का, ये आहार का तज्ञ विज्ञान अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारा मानव जाति में, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये बायोकेमिकल साइंसेस वालों ने हमको पिछला 50 साल से हर जगह पे सफेद चावल और गेहूं को खाना के रूप में खिला रहे हैं। ये तो बहुत अनसाइंटिफिक है, क्योंकि ये दो दाना बिना रेशा, बिना फाइबर हमारा खून का असमतोलन बना देता है। ग्लूकोज को बाढ़ जैसा हमारा खून में रिलीज करता है, क्योंकि राइस एंड व्हीट have no fiber to hold back glucose, and thus releasing glucose in large quantities within 20-30 minutes of our consumption, making the homeostasis of the blood go haywire, and thus causing all the diseases, be it blood pressure, be it diabetes, be it thyroid issues, be it rheumatism, be it cholesterol increase, be it triglycerides increase, be it obesity, be it heart block. All these modern day diseases are just because these scientists, ये तज्ञ लोग नहीं बताया कि ये चावल से गेहूं से हो रहा है। क्योंकि गेहूं चावल इन द नेम ऑफ हरित विप्लव हर जगह पे फैलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का है, ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का है। ये सब एक एट द बिहेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट फूड कल्चर हैज हैपेंड एंड नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट। यही है हमारा हिपोक्रेटिक वर्ल्ड। इसमें साइंस नहीं है। आज तक मानव जाति खा रहा है, उसमें साइंस नहीं है, क्योंकि वी आर डिस्टर्बिंग द होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड। We are supposed to make glucose at the end of 6 to 8 hours of digestive canal functioning, whereas we are feeding something into our mouth that releases glucose suddenly like a flood into our blood system. And more than this, what is unscientific, I cannot understand. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? The most unscientific food you can feed your people, सफेद चावल और गेहूं। हरित विप्लव नाम पे ये सब के सब जगहों पे पहला गया है एट द बिहेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये खा के हर जगह पे लोग बीमारी पड़ रहे हैं, वो डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड। उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काम लगाया गया है कि आप टैबलेट्स भेजो। वो भेजने का कसामत अभी तक हो रहा है हर जगह, बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ बिजनेस। अभी हमारा साइंस, हमारा वैज्ञानिकता सही हुआ तो पिछला 50 साल से हमको हॉस्पिटल कम करना चाहिए, बीमारी कम होना चाहिए।
तो फैक्ट वैसा नहीं है। हमको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जगह पे भर रहा है, हर जगह पे बीमारियों में हम ऊंचा जा रहा है ग्राफ। एंड हाउ कैन वी कॉल अवरसेल्फ साइंटिफिक? यही है मेरा पहला सवाल। वे सवाल हम 1987 में पूछा, व्हेन आई वेंट टू अमेरिका फर्स्ट। हम पहले बार अमेरिका गए थे। वहां एक 6 साल की बच्ची मासिक धर्म निभाने का शुरू हुआ। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी that a 6-year-old girl starts her period at the age of what she did. सहज रूप में मानव जाति 15 या 16 साल में मानसिक धर्म शुरू करना है। एक तज्ञ भी, एक डॉक्टर भी, एक MD MS डॉक्टर ये सवाल नहीं पूछा क्यों ऐसा हो रहा है। वो हुआ है क्योंकि अमेरिका या यूरोप वालों ने हमारा गाय को लेकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक फीड करके हर गाय से 25 लीटर दूध निकालने का तरीका, IVF, सब कुछ, ऑल दिस सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वो दूध बच्चों को पिला के हार्मोनल इम्बैलेंस किया है। जैसा हरितविप ग्लूकोज इम्बैलेंस किया है, ये श्वेतविप white revolution has created hormone imbalance. Hormone imbalance is steroids or chemicals that control millions and zillions of biochemical reactions to go in the right way. And we are disturbing the balance of hormones in our body. क्या कर बैठे हैं? And हम सोच रहे हैं हमको स्वास्थ्य मिलेगा ये दूध पिलाने से, ये दूध पीने से। No तज्ञ, no doctor has questioned this. ऐसा ही हम अभी और एक विप्लव बना रहे हैं, सो कॉल्ड गुलाबी विप्लव, पिंक रेवोल्यूशन, इन द नेम ऑफ प्रोटीन। ये सब लोग हमारा पेट के अंदर बसा हुआ डॉक्टर को मारने का तैयार कर रहे हैं। वो तो अभी अभी पिछला 25 साल से सब लोगों को नजर पे आ रहा है। दैट इज माइक्रोबियल इम्बैलेंस। सो all these so-called food scientists have created glucose imbalance, microbial imbalance, hormonal imbalance. And हम सोच रहे हैं हमको सही आहार दे रहे हैं, सुपोषण मिल रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट and fat do not make nutrition. उसका सही संयोजन, उसका सही कारवार हमारा जीव प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप में होना चाहिए। वो होने के लिए हमको माइक्रोबियल गट माइक्रोब्स को सही रूप में, सही अंदाज में रखने का तरीका हमको एक चैप्टर में भी नहीं बता रहा है। तो ये न्यूट्रिशन वर्ड इटसेल्फ इज sabotaged by this food corporation. सही में हम 1 मिलीग्राम भी शुगर हमारा माउथ में नहीं डालना है। आपको बायोकेमिस्ट्री जान लिया तो क्यों हर देश इतना मेट्रिक टन शुगर बना के उगा के खिला रहे हैं? The first question I asked, and we need to find the answer. That means all the diseases that we are creating, they are all manufactured by our food, not by any other thing. So हमने glucose imbalance, hormonal imbalance, microbial imbalance किया है जानबूझकर, in the name of science, in the name of development, in the name of सुपोषण। ये सब का सब गलत बात है। We are creating business, mining business, transport business. All businesses are encouraging this research. This is the way it works. Audio not working? Am I not audible? You are audible, sir. Yeah, you're audible. Someone has sent a message. I'll check with them. Okay. So, एक कुपोषण
मिलेट से भर सकते हैं इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। पोषण भर सकते हैं मिलेट से, वही मिलेट से ही सब कुछ बनता है, क्योंकि मिलेट्स आर द राइट फूड बाय डेफिनेशन। ये नेगेटिव आपको समझ में आया, तो उस सब का सब हम एक ही साथ निभा सकते हैं जब हमारा स्टेपल फूड मिलेट्स हो जाए। मिलेट्स में क्या है इतना भरपूर, इतना भयंकर वातावरण को हम सुधार सके? क्या है, क्या है उसमें, क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं है कुछ? They are not nutraceutical, they are healing drugs. So for being healthy, you just do not need nutrition alone. ये सुपोषण से नहीं बनता है स्वास्थ्य, सुपोषण प्लस समथिंग, क्योंकि हर जीव रासायनिक प्रक्रिया मेटाबॉलिकली रिलीज टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट। कल्मशों को पैदा करने में हर जीव रासायनिक प्रक्रिया चलने के विधि विधान। मैं एक आपको सीधा साधा उदाहरण बताता हूं। हम ग्लूकोज को हर जीव कोश के अंदर छोड़ने के बाद इंसुलिन की सहायता से हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हर जीव कोश के अंदर छोड़ने के बाद ग्लूकोज को हम भस्म करने के बाद शक्ति पैदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो थर्ड बॉन्ड ऑफ फॉस्फर इज ब्रोकन टू गिव एनर्जी पर जीव प्रक्रियाओं को। तो ये क्या कर रहे हैं हम, रासायनिक शक्ति को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम जीव शक्ति बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर हम भस्म करने के वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करते हैं। ये बहुत बहुत कल्मश वायु है। ये कल्मश वायु को हमारा अंदर 3 मिनट रखने से हमको मरना पड़ता है। बाई चांस हम आपका नाक और माउथ को दबा के रखे 3 मिनट, आप मर जाएंगे। इतना अद्भुत जीव रासायनिक प्रक्रिया रेस्पिरेशन में हम ये पैदा करते, हर जीव कोश में पैदा होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा खून फिर और एक बार टैग करके श्वासकोश में एक्सचेंज करने के नाते हम कार्बन डाइऑक्साइड इंगालाम को ऊपर बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए अद्भुत जीव रासायनिक प्रक्रिया, जहां हम शक्ति पैदा कर रहे हैं वहां बहुत बड़ा विषवायु भी पैदा हो रहा है। दैट्स व्हाट ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी प्लस टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट पैदा हो रहा है। ऐसा ही हमारा अंदर हर जीव रासायनिक प्रक्रिया में कुछ सही, कुछ हमको मदद करने वाला, बेहतर करने वाला, सबका सब प्रक्रिया पैदा करने के वक्त टॉक्सिक मटेरियल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मटेरियल डोमेन, वही है EMF, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। हर टम्बलिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस सम, लीक्स आउट सम एनर्जी। ये एनर्जी को हम नेगेट करना है, वहां के वहां खत्म करना है, नहीं तो ये एनर्जी अक्यूमुलेट करके फ्री रेडिकल बन सकता है, जब हमको एंटी ऑक्सीडेंट का जरूरत पड़ता है। ये फ्री रेडिकल बहुत सारा पोटेंशियल हो सकता है, उसका पोटेंशियल हमको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एक एंटी ऑक्सीडेंट आप लेने से ये फ्री रेडिकल को हम नहीं बुझा सकते। तो वो पोटेंशियल ऑफ वेरिएशन हैज टू बी मेट, वही है हमको कल्मश बनाने वाला एजेंट। दिस इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स कैन ट्रांसलेट इनटू मटेरियल टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट। वो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है ज्यादा से, क्रिएटिनिन हो सकता है,
और बहुत सारा टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट accumulation in the body, fat materials, ये organelle dysfunctional, organ dysfunction, and then the whole body dysfunction can happen. That means we have to remove this toxic morbid waste. के कलमशों को हम हर दिन निकालना बहुत जरूरी है. So nutrition is one side and we need to deal with this toxic morbid waste. हर जगह, हर वक्त, हर क्षण हमारा शरीर में, हर जीव कोश में पैदा होने वाला ये बात को हम नहीं समझा है इतनी देर तक. इसीलिए टैबलेट्स का रूप में, सप्लीमेंट्स का रूप में करने का बिजनेस को हम बढ़ा दिया गया है पिछला 50 साल से. मालूम हो रहा है? ये बैकग्राउंड है, ये नेपथ्य हम बता रहे हैं. क्या है मिलेट? मिलेट्स में क्या है? सबका सब विटामिन है, थायोल्स है, सबका सब पोषण, सुपोषण का निर्वचन है मिलेट. सुपोषण का निर्वचन है मिलेट. बट उसके अलावा, उसके ऊपर और एक आयाम में हमारा शरीर में हर जीव रासायनिक प्रक्रिया जगाने वाला, पैदा करने वाला ये ईएमएफ को, नेगेटिव एनर्जी को, वो कितना भी हो, ईएमएफ पोटेंशियल कैन बी वेरी वेरीड. ये सब का सब पोटेंशियल डिफरेंसेस को ईएमएफ का रूप में वहां से वहां खत्म करने वाला लिग्नॉन हमारा मिलेट में है. कहाँ है मिलेट? वहां है जग सारा भूल गए. एट द बिहेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड फूड कॉर्पोरेट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, they have been managed, they have been planned in the boardrooms of these companies to be eliminated. इसीलिए हर जगह ये तज्ञ लोग आके बोला है एक कोर्स ग्रेन है, क्यों खा रहा है? तो हमारा थालियों में ये मिलेट का आना हम छोड़ दिया है. It's not that gehu and rice came and we forgot. It's because of gehu rice we have forgotten. It's because of gehu rice we have forgotten, because gehu rice और C3 grasses जब पानी भरता है C3 to C4 ग्लूकोज सिंथेसिस में एक स्टेप से पानी भरने से ज्यादा यील्ड आता है. That happens only with rice and wheat. हमारा C4 grasses है ये मिलेट. मिलेट्स में वो नहीं होता है क्योंकि ग्लूकोज बनता है C4 से. So that's why these are called climate resilient. There is no need for water. पानी पर्यावरण से खींचकर ये घास हम उगा सकते हैं. Just sow the seeds with अंकुर आने के बाद ये पानी का जरूरत नहीं है. इनफैक्ट 1 किलो मिलेट उगाने में हमको 300 लीटर की एवरेज. और यहाँ हम अनाज के बात करेंगे. सारा का सारा उत्तर भारत देश में मोटा अनाज की बात होता है, क्योंकि मोटा अनाज माने क्या है, मतलब क्या है? कुछ anyone can answer me? What is मोटा अनाज? असलियत में मिलेट और 2 kinds, मोटा अनाज, छोटा अनाज. मोटा अनाज है मतलब क्या है? छोटा अनाज भी है. तो ये मेजर मिलेट, माइनर मिलेट. ये मिलेट तो बहुत छोटा है परिमाण में, लेकिन उसमें 2 अंतर है. एक मोटा अनाज है जैसा बाजरा, जोवर, रागी, चेना और मक्की. मक्की इज नॉट ए मिलेट क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है ग्रेन, इसलिए वी कॉल इट ए ग्रेन. तो सफेद चावल और गेहूं आर नॉट मिलेट. They are not millets at all. They are grains belonging to the family Poaceae. वो भी घास है, ये भी घास है. व्यत्यास यही है कि ये C4 grasses है. पानी भरने से यील्ड ज्यादा नहीं होता है मिलेट्स में. जहां पानी भरने से ज्यादा होता है यील्ड, वो कहलाता है C3 grasses, जैसा आपका सफेद चावल
और गेहूं. ये war technology was able to find the bomb material, increasing the yields of these two grains. That is the foundation of green revolution. It is to take away the waste of bomb material. These fertilizer companies came into existence, and this is the golmaal. This is the golmaal of food corporate culture. वहां से शुरू हुआ ये धोखा. हर जगह पे millets were the food, not only in India, even in America, even in Italy, even in Europe. सब जगह पे domesticated first grasses are the millet. There is no doubt about it, absolutely, because they can grow from 10 degrees centigrade to 45 degrees centigrade. Absolutely no problem with the temperature. Jera, C3 grasses have a very narrow range. फिर भी ये दोनों को हमारा दाना के लिए चुनाया गया है because it helps the business of fertilizers and pesticides. यही है बात. कोई बताने के लिए पहला कदम नहीं उठा रहा है. This is the problem with human race. We have chosen our food, in quotes, food, which is not food for human beings, but it is made out to be human beings food. So यही बात हमको 1987 में समझ में आया. ये बात हम बताने के लिए पिछला 25 साल से काम कर रहे हैं, और एक ही तरीका है कि हम ये सब मॉडर्न डे डिसीजेस को ये दाना खिलाने के बाद हम रिवर्स कर सकते हैं. This is the theoretical aspect of millet, which I figured out in 1988 or 89. उसके बाद 1997 में हम इंडिया वापस आके ये दाना भी बचा नहीं है. There are no one to talk about it. Even if the tribals are making and eating, वहाँ पे भी ये 1 रुपए का चावल, 1 रुपए का गेहूं आटा भिजवाया है. वहाँ पे भी लोग बीमारी पड़ रहे हैं, क्योंकि there is no portion, there is only कुपोषण in this modern day food grain. ये बात हम सीधा साधा आज से बात करना है. हर तज्ञ लोग यही बात करने को शुरू करना है. यही है तरीका. हम हमारा खोया हुआ मिलेट, सही दाना को सही सुपोषण देने वाला हर आदमी को, इट्स नॉट एशिया, इट्स नॉट India, it's not Africa. Every human being that lives on this planet Earth, supportion can be given only by millet, not anything else, not anything else. This is the statement every expert who is so-called food nutrition expert should start talking about from tomorrow onward, if their science is right. This is what I am trying to communicate to the whole world. क्योंकि देखिए, I will show you a video. Please, Neha, show the video. Yes. Hi, I'm Shruti. I'm from Bangalore. Last year, my son was diagnosed with type 1 diabetes in the month of September. He was barely 13 at the time. He had to be rushed to the hospital. He was in the hospital for about 7 days, where his medication or treatment included him taking insulin injections. And even when we got back, we were told that, this is how his life is going to be, where he has to manage his blood sugar levels only with insulin injections, and that he had to take it for about 4 to 5 times a day. And not just that, in the middle of the night, we had to check his blood sugar levels every day so that he doesn't enter a hyperglycemic state. And that is very painful to see, right? Thankfully, on the 9th day after his discharge, our very close relative, because of his experience with Dr. Khadar, recommended us to go consult him. So I took my son along to Mysore, and we saw Dr. Khadar. Dr. Khadar immediately put us at ease. He said, my son does not have to be dependent on insulin injections for the rest of his life, that there was another way that included switching to a millet diet, stopping anything that was processed, stopping milk and milk-related products, switching to an organic diet, and following a good
physical regime, that is a good exercise routine. And immediately we started that. Also, Dr. Khadar, in his disease protocol, he recommends for diabetes, he recommends taking concoctions of certain leaves in the morning and having bull-driven oils. There are 5 types that he recommends for diabetes. So we started doing that for my son. And in a week's time, we could see how his insulin dosage had to be reduced, right? For every meal, in fact, we had started giving him lesser and lesser because his blood sugar levels were getting controlled with lesser dosage of insulin. And believe it or not, at the end of 1 month, we could, stop his medication completely. He was just managing it with whatever Dr. Khadar recommends, with the millet diet, with drinking the concoction of certain leaves, with the bull-driven oils, and following a healthy regime. So we are extremely indebted to Dr. Khadar for his timely help. We are grateful to him because he's been our savior. And I recommend that everybody follow Dr. Khadar's protocol. Even if you're healthy, please switch to a millet diet. Stop eating gluten and rice because it does more harm than good to our bodies. All of us at home eat whatever my son has to eat to manage his health, and that is great support when you do that. And we can see the difference even in our health. So thank you again, Dr. Khadar. You've been our savior, as I've mentioned time and again. And I recommend that everybody follow a millet diet to stay healthy, to stay stronger, and to be happier. आपको हिंदी में सुनना है तो you can play the video further. नहीं तो हम stop करेंगे. आपका मर्जी, whatever you decide. Administrative people who are running the show can decide to play it in Hindi or I can proceed. आपको इजाजत देना है मुझे क्या करना. You decide to play the video further. It is हिंदी में भी बात किया है. Hello. Sir, we can continue with your talk. Yeah, okay, that's fine. So this diabetes is declared incurable by the present day modern establishment, allopathic system. And there is nothing you can do when it is juvenile diabetes. This is what has been completely brainwashed to the whole human race. And we have cured such cases hundreds and hundreds. क्योंकि आपका आहार सही हुआ तो औषधि का जरूरत नहीं है. आपका आहार सही नहीं है, कोई दवा आपको नहीं काम करता. बस इतना है. So food decides whether you are going to be healthy or not the medicine. Medicine का, औषधि का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बीमार बन चुका है. आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको सही आहार को चुनना है. वो सही आहार क्या है कि हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस ना करे. क्यों नहीं करता है मिलेट्स खाने से? स्पेशली छोटा अनाज, कुटकी, कोडो, सावा, हरा सावा और फॉक्सटेल, कंगनी. हर जगह पे ये 5 दाना का नाम अलग अलग है. हिंदी लैंड में हिंदी स्पीकिंग पीपल हैव कंफ्यूजन. कुछ जगह पे कंगनी बोलते हैं, कुछ जगह पे कुटकी बोलते हैं, कुछ जगह पे झंगोरा बोलते हैं. दे एक्सचेंज द नेम्स. बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट. ये छोटा दाना है, प्रमाण में बहुत छोटा है, माइनर मिलेट कहला जाता है. ये माइनर मिलेट तो एक्सटिंक्ट हो गया है ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ये मोटा अनाज का हस नहीं निकाल के हम खा सकते हैं, जैसा बाजरा, रागी, जोवर. इसीलिए ये 3 दाना अभी भी बचा हुआ है कुछ जगहों पे. दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव मोटा अनाज, बाजरा, जोवर और चेना. और एक दाना है वो हस्त
निकालने के बाद ही हम खा सकते हैं। वो भी एक मोटा अनाज है, छोटा अनाज से ज्यादा होता है। तो ये 5 दाना को मक्की भी एक C4 ग्रास है, बड़ा होता है प्रमाण में, इसलिए उसको मिलेट नहीं कहते हैं। वो मोटा अनाज के वर्गीकरण नहीं करते हैं। तो 4 अनाज है, ये है रागी, मुंडिया बोलते हैं ओडिशा में, एंड वहां लोग समझ रहे हैं मुंडिया ही मिलेट है। मुंडिया, there are more than 4,000 to 6,000 millets on this planet. हम खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। मिलेट भगवान ने उगा रहा है, क्योंकि हर तरह पंखियों के खाने के लिए ये बनाया गया है। इसमें हमारे लिए ये 5 दाना हम रिसर्च किया है पिछला 25 साल से, हर बीमारी को हमारा शरीर से भगा सकते हैं। We have listed in our protocol list 108 diseased conditions of modern day, and we have healed them completely in thousands and thousands of numbers. ये है सही बात, क्योंकि ये आहार में हमको ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं होता है। दैट मीन्स बीमारियों को पैदा करने के जगह पे, रूट पे हम बात कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम एक प्रयोग कर रहे हैं। सो व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज homeostasis is not disturbed, you do not generate these diseases at all. वो काम हमारा मिलेट में भरा हुआ रेशा टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो इज सिंगल डिजिट। ये 5 दाना में कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो इज इन सिंगल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, टेक ब्राउन टॉप मिलेट, उसमें 69% कार्बोहाइड्रेट है, 12.5% फाइबर है। तो वो डिवाइड करने से आपको 5.5 मिलता है, सिंगल डिजिट। वही आप हमारा सफेद चावल को ले लीजिए, 79 डिवाइडेड बाय 0.2 ग्राम, यू विल गेट 395 कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर। यही रीजन है, यही कारण है सफेद चावल और गेहूं को हम नहीं खाना है, क्योंकि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं इस टेक्निकल टर्म, वो बहुत ज्यादा है। हमारा ये 5 दाना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द लीस्ट, बट डायरेक्ट पैरामीटर इज कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो। इस दौर में आप सोचा रागी, मक्की, चेना, बाजरा का भी डबल डिजिट्स में आता है, 25-35 का। इसीलिए ये दाना आजकल मॉडर्न डे डिसीजेस को आपका शरीर से भगा नहीं सकता है, लेकिन उपशमन करने का काम कर सकता है, क्योंकि ये दाना, ये 5 दाना को हम रेशा का प्रमाण not more than 3.6 grams per 100 grams दाना से। So this is the reason why मोटा अनाज are called neutral grains, छोटा अनाज minor millets are called positive grains। इसीलिए हमारा दक्षिण भारत देश में पॉजिटिव को श्री बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा महाभागी आरोग्य है। आरोग्य ही महाभाग्य है, महाभाग्य मीन्स अल्टीमेट वेल्थ। उसको हमारा दक्षिण भारत देश में श्री बोलते हैं, इसीलिए हम ये दाना को श्री धान नाम दिया है। 2003 और 2004 में हम ये सब काम करने के बाद, गैंग्रीन लोगों को रिवर्स करने के बाद, बीपी लोगों को रिवर्स करने के बाद, थायराइड पेशेंट्स को रिवर्स करने के बाद, बहुत सारा पेशेंट, not 1, 2, 3, 4, 5, hundreds and thousands of patients have been reversing their problem with the use of these 5 minor millets, and we called them सिरिधान। and आजकल हम बहुत क्या कहना चाहते हैं, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बात उसका समझ में आया है, he is a visionary, he wants to make this as our food, क्योंकि आत्मनिर्भरता बनता है जब हमारा
प्राचीन पारंपरिक आहार धान्य हमारा थालियों में फिर एक बार हम भर सके और हमारा शरीर से ये सब का सारा बीमारियों को हम भगा सके. दिस इज द रीजन व्हाई आई थैंक Shri Pradhanamantri Narendra Modi ji with my full heart, because he has made this decision to introduce these wonderful grains as our food back to kitchen. So हम हमारा रसोई घर के पास जाना है, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो, नहीं होटल्स पे, नहीं हॉस्पिटल्स पे. So processed food and hospitalization is almost one and the same, because you are eating the wrong food, going to hospitals thinking you will get well, you will get only tablets. यही है आपको मिलता है. एंड बहुत सारा अच्छा गुण, विशेष गुण यहाँ पे मिलता है. ये फाइबर अलग अलग होता है, हर दाना में अलग अलग होता है. ये 5 दाना का फाइबर हमारा अंग को निष्कल्मश बनाने में सार्थक बनता है. वो लिटिल मिलेट में हमारा जननांग को शुद्ध करने का ताकत है. कोडो चावल, कोडो मिलेट पे हमारा मूल मज्ज, बोन मैरो एंड ब्लड को शुद्ध करने का ताकत है. और बॉर्नियार्ड, जंगेरा बोलते हैं, कुटकी का कहाँ जगह पे बोलते हैं, वो बॉर्नियार्ड मिलेट का फाइबर में हमारा सॉफ्ट पार्ट्स को, जैसा जिगर और पैंक्रियास और निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम को शुद्ध करने में कामयाब होता है. वैसा ही फॉक्सटेल मिलेट को कुटकी बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं कुछ जगह पे. इस पे हमारा श्वासकोश को और नर नसियों को शुद्ध करने का ताकत है. वैसा ही ब्राउन टॉप मिलेट, अभी भी अमेरिका में ये लोग उगा रहे हैं बहुत सारा टन, बट क्या लिखा है उस पे, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बर्ड फीड बोलते हैं. वही बात सुन के हमारा देश में भी ये ब्राउन टॉप मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट को बर्ड फीड बोल रहे हैं. तो बर्ड फीड के लिए छोटा अनाज अभी भी हमारा देश में भी वहां जहां वहां हम उगा रहे हैं. यही है हमारा दौर्भाग्य. सही खाना को हम पशु पक्षियों को डाल के, खाना नहीं लायक दाना को लाके हमारा सिर पे, हमारा मुंह पे बिठाया गया है एट द बिहेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट फूड कल्चर. ये बात सब लोगों को समझना है. नॉट ओनली इन एशिया, नॉट ओनली इन अफ्रीका, all over the world this is true. So let the human race embrace these 5 millets which can bring you back health, which we have demonstrated without any doubt, including the so-called genetic irreversible diseases like juvenile diabetes can be washed out of your body in a matter of 3 months. And that boy has been now for the last 2.5 years. He had no need for any medication, no need for any hospital, no need for any doctor at all. They don't even visit me. They visit me once a year. They take my blessing. That's all there is, nothing else. So no one needs to visit hospitals if your food is millet. क्योंकि वो EMF को ये fiber, aromatic pool of electrons, lignons, negate there and then. So the तरीका, ये दाना खाने का तरीका, ये 5 दाना को आप 2-2 दिन बदल के खाने से 10 दिन में आपका शरीर सब का सब निष्कल्मश बन जाता है. सब का सब बीमारियां आपका शरीर से बाहर निकलने का तरीका ये मिल जाता है. ये बहुत खुशी का बात है, क्योंकि you can have diseases due to your wrong food, wrong habits, wrong culture. All these things can be corrected once you start getting homeostasis of the blood and the corrections of hormones and microbes. Gut microbes का बहुत अंदाज तरीका से हम अंबली बना के खिलाने से रोगियों को हम सहज रूप में स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं. ये सबका सब विचार हम एक PDF में भरा दिया है. वो हिंदी में है,
इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारा भाषाओं में ये तर्जुमा किया गया है। उसका कॉपी, पीडीएफ कॉपी हम ऑलरेडी प्रतिभा मैडम को भेज दिया है। सो सब लोगों को आप बांट सकते हैं। और बिकॉज ऑफ EMF, the PMF is at various potentials in this fiber. It negates the diseased condition not to be arising in our body. A oxidative stress, when we burn glucose, the energy trapping, the negative energy can be dissipated, annulled, and negated by the fiber of these various grains. And this fiber, which is soluble, does the job in each and every cell, and the insoluble sits in the gut and establishes microbial population slowly and steadily and does the remaining jobs. The doctor in our body is the gut microbes. So we establish the doctor in our body by taking millet fermented porridge for a few weeks, and then you're set to go to be healthy. So in a matter of 6 months, everyone can become healthy on this planet if only we choose millet. And of course, there are too many dimensions. The war condition, there are a lot of people when there is war, because centralized food production makes them not to have food. So when you produce food everywhere and everywhere, 90% of the land on this planet can be food producing land. Whereas now, choosing rice and wheat as food, we have restricted it to 10 or 15% of food production, which is a very bad thing. It is a good thing for the centralized companies. So that's why they have chosen that. So by choosing millet, we decentralize food production. There is no need for transportation. There is no need for huge amounts of diesel to be used for transportation, because food is available everywhere on this planet. Everyone can eat and produce and eat. And these are the kinds of wonderful benefits that we can go on talking about. And by producing millet, you can replenish your lost soil. And producing millet and eating as our food, we don't need to disturb our river. So we can save our river, we can save our soil, we can regenerate the lost, damaged soil because of modern day agriculture. We can actually bring back health into each and every family of this planet without much expenditure. Only decision has to be made, and that decision has been made by India, that the most important policymakers have recognized this. And it is not just that it is to be encouraged, it has to be a policy decision that we all shift from this modern day agricultural disastrous grains to wonderful millets, which have everything written all over their bodies and the grasses, that they are rejuvenators, replenishers of every natural resource that we have lost because of green revolution, white revolution, and pink revolution. And one more they have in their sleeves is blue revolution, where we are going to introduce a lot of toxic metals into our system, because the blue revolution means fish, the aqua thing that can actually have the capacity to concentrate these toxic metals. The fish and the water bodies are filled with the toxic metals, can be concentrated into this fish. And if you are going to feed this fish as food to the people, you are going to increase the toxic metal waste into our bodies. So another set of wonderful, very bad diseases like Parkinson's, Alzheimer's, and transgender, all these things are going to be much more in the future generation if we continue these centralized food systems to rule us. So it's high time we opened our eyes, get back to the real food, that is millet, and not tinker with genetic modifications in the name of increasing the yield. There is no need to increase the yield. Now we are left with Punjab. Another 3-4 minutes, I'll be finishing my lecture.
हमारा पंजाब में अभी तो 15 साल का पानी बचा हुआ है, आप गेहूं और चावल उगाने से वही पानी हमको दे दो, हम 500 साल का खाना बना सकते हैं जब हमारा खाना मिलेट्स बन जाए. So that is the environmental impact you can think of when you choose your food as millet and when you choose your food as rice, wheat and sugar. This is the difference. So we can save our river, we can save our soil, and we can save the fauna and flora of this planet when there is food all around, not only for human beings, for every living thing on this planet. Millets are the basis. That's how the धरती माँ आपको आपसे बचाने में, this soil can save itself from the floods, from the hot sun, from the wind, natural disasters, just by covering the C4 grass roots, holding the top 5-inch soil, and we can just revert back the whole soil if only we choose policy to grow millet all over the planet. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Vali, for that very enlightening session. There was so much substance in your talk. Thank you very much. That's why it's called power talk. Right, right. So, Dr. Vali, there are a lot of questions coming in, and I'm going to request the audience to please put up your hand, your screen hand. Please put up your hand, and then in order, we will unmute you, and please go ahead and ask the question. But please be very short, very crisp, and so that Dr. Vali can answer as many questions as possible. And there are also questions coming in on YouTube. So I will just read from the chat the questions that are coming. So first, Mr. Gautam, please go ahead. Please unmute yourself and please address your question to Dr. Vali. जी, हेलो, आप सबको नमस्कार. मैं गौतम हूँ, स्वयं शिक्षण प्रयोग बिहार से. हमारा 3 सवाल है मुख्य रूप से. एक, ये हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो फूड प्रैक्टिसेस थे हमारे पुरखों के, यानी दादा परदादा, तो वो लोग, ये हमारा मिलेट और जो मुख्य अनाज है, ये हमारे हैबिट से धीरे धीरे दूर क्यों होता चला गया? उस पर क्या कारण रहे होंगे कि ये इसको रिप्लेस करके और चावल और गेहूं ने ले लिया? एक तो वो हो गया. दूसरा, क्या हमारा अभी का जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बच्चे बच्चियों का, वो किस मात्रा में इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है उसका शरीर? क्योंकि उसका शरीर को तो आदत हो चुका है जैविक उत्पादन को खाने का, गेहूं चावल जो जैविक तरीके से उपजाया जा रहा है. तो इसको अडॉप्ट करने का हम लोगों का शरीर किस लेवल तक अभी तैयार है, या हमें किस तरह से धीरे धीरे हमारे शरीर को फूड प्रैक्टिस को रिप्लेस करने की जरूरत है? 2, और तीसरा सवाल था कि जो पीडीएफ सर ने कहा है, वो पीडीएफ हमें नितिन सर के द्वारा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. कम से कम और ना कुछ तो खुद का ज्ञान बढ़ा करके जो हमारी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हमारे साथ, उनको थोड़ा अवेयर कर सकते हैं अलग अलग सेशन में, ट्रेनिंग सेशन. थैंक यू. हाँ, हम तो सबका सब समाधान अभी लेक्चर में दिया हुआ है, लेकिन और एक बार हम कोशिश करेंगे. और धीरे धीरे हम गेहूं चावल से मिलेट का खाने के लिए हमारा तैयार करना है. आपको मिलेट्स खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एक ही विचार है कि हम ये दाना को खाना पकाने में भिगोना का जरूरत है, क्योंकि ये रेशा पानी से हम जलीकरण करना है. सो 6-7 घंटे हम ये दाना को भिगोने के बाद ही पका सकते हैं. वो सबका सब प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं. सो कुछ लोग समझ रहे हैं ये खाना हमको नहीं होता है, हम ये चावल खाया है, गेहूं खाया है इतना दिन. तो सबका सब प्रश्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी भी आप बता सकते हैं, आपका शरीर में हमारा ये एंजाइम आर ऑलरेडी देयर इज नथिंग टू वरी. हमारा गट तो ऐसा ही रेशा से कार्बोहाइड्रेट
को स्लोली एंड स्टडीली रिलीज करने का तरीका को लिए भगवान बनाया गया है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एक ही बात हम याद रखना है कि ये रेशा भरा हुआ, रेशा ज्यादा नहीं है, रेशा भरा हुआ है इस दाना में, इसलिए हम इसको भिगो के खाना पकाना है. तो 6-7 घंटे लगता है. आटा बनाने के बाद भी 2 घंटे आपको भिगोना जरूरत है. बस इतना ही याद रखना है. तो ये हम हमारा रसोई घर में साधना करने के बाद खाना खिलाने से हमारा बच्चियों को, आपको भी. एंड ये बात नहीं भूलना, हर पुरुष को भी कुपोषण है ये गेहूं चावल खाने से. तो सबके लिए प्लीज एक्सपर्ट keep talking about this. Don't think only ladies and girls are kuposhan. Everyone on this planet is suffering from kuposhan because they're not eating the right food. So ये बात हमारी तरफ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर आदमी को न्यूट्रिसिटिकल प्लस हीलिंग ग्रेन मिलेट्स को खाना जरूरी है. हम ये बताना चाहते हैं मानव जाति has eaten from time immemorial. First domesticated grass है C4 grass. So सबका सब पेट इसीलिए बनाया दिया है भगवान ने. So there is no problem at all switching to millet. कर सकते हैं, आपका मन में आपका मेंटल सेटअप सही नहीं हुआ है. So you set your mind properly, things will be all right. अब PDF तो आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हम हर जगह पे ये उगा सकते हैं. एंड देयर इज नो नीड फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन. एंड वी कैन प्रोवाइड फूड फॉर नॉट 1 planet, 3 planets. 25 बिलियन पीपल को भी हम खाना बना सकते हैं अभी विद इन नेक्स्ट 6 months. Thank you so much, sir. WCD MP. Yeah, thank you, Noita. Thank you, Dr. Khadar. बहुत ही बढ़िया आपकी टॉक ये रही, बहुत ही यूजफुल है. बस एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या किसी लोकल एरिया का जो भी मिलेट है वो वहीं कंज्यूम होना चाहिए या कोई भी मिलेट कहीं भी खाया जा सकता है? क्योंकि इन दिनों लोकल एंड सीजनल भी इस समय क्या जुड़ता है क्या कोई कि बाजरा बहुत मैं बात समझता हूँ. ये बात तो पिछला 200-300 years गो बैक, there is nothing like local and regional. ये सब का सब दाना हर जगह पे उगाते थे, लोग खाते थे. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जर्मन मिलेट बार्नयार्ड मिलेट कहला जाता है. फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट कहते हैं. लिटिल मिलेट को अफ्रीकन मिलेट कहते हैं. ब्राउन टॉप मिलेट को अमेरिकन मिलेट कहते हैं. कोडो चावल को हिमालयन मिलेट कहते हैं. दैट मीन्स इट वाज देयर एवरीवेयर, एवरीथिंग. इट इज जस्ट दैट बाय चॉइस एंड प्रेफरेंस people started eating different grains. Just like, say, humans have the what do you call the we get used to, we get addicted to certain things. So this addiction is what makes things local or regional. So हम ये बताना चाहते हैं कि हर दाना को, ये मिलेट्स को हर जगह पे उगाते थे लोग, और बहुत सारा इंटीग्रेटेड मल्टीपल क्रॉप सिस्टम्स में उगाते थे. कोई जरूरत नहीं थी पेस्टिसाइड्स का. वो सब एक्सपेरिमेंट्स हम किया है. इनफैक्ट वी हैव ग्रोन दिस 10 millets along with another 25 food products, and that's what we call jungle krishi, and we have trained thousands of farmers in this. That means you should not grow your food in a monocrop monoculture. That is an artificial setup. Though you are growing one crop, even if you grow brown top millet, single monoculture, it's not natural. So in nature things grow together. So यही बात हम बताना चाहते हैं कि there were these grains all over the world, but we have phase by phase chosen certain things, and that we are thinking is local and regional. ये बात सही नहीं है. This is a misconceptions that many experts have in their mind. A millets are local as well as universal. This is the answer that I want to give you. So आपको चुनाना है. आपको चुन के क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या आप उगा सकते हैं. ये 5 दाना तो कहाँ पे भी हम उगा सकते हैं. And that's what should be, because you need all these 5 grains. There may be many more grains which are positive, which can help human race.
So future research has to be done from various tribal areas. We need to get back to many more millets and do the scientific work, which has been missing. Kyunki gehu, rice has taken away all the resources. No one was talking till today about millet, till I came back and started digging into this wonderful world of millet. And season for किसी particular season के लिए particular millet or any millet can be used. नहीं, इसको season नहीं है. You can grow any time. Just जरा सा पानी चाहिए. You can have just sprinkle. And of course, rainy season you can grow all of this. You know, that's a foregone conclusion, है ना? कभी भी हम क्या उगा सकते हैं, जरा पानी चाहिए ना. तो हर मौसम में हमको पानी जहाँ ज्यादा होता है वहाँ सब हम उगा सकते हैं. बिना पानी भी विंटर में भी ये घास पर्यावरण से पानी खींचकर हम उगा सकते हैं. इवन इन समर there are many places, even in Gulf countries, we can grow this with a little bit of cocoa peat and few sprinkles. So that means even Gulf countries can grow their food if they choose millets as their food. Okay, so we can eat every millet in every season. Yeah, but only thing is when you cook, you soak them and cook. Koi problem nahi. Okay, thank you. Mr. Neeraj Srivastava. नीरज जी प्लीज. नमस्ते सर, मैं नीरज श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के श्योपुर से जिले से. सर, हम लोगों ने WHH के सहयोग से करहाल ब्लॉक में कोदो का उत्पादन करवाया हमारे कुछ किसानों को अवेयर करके. लेकिन सर अभी परेशानी ये हो रही है थोड़ा सा, लोग इसको निकालने में, जैसे इसका जो दाना निकलता है कोदो का, उसमें बहुत समय लगता है, तो लोग उसमें रुचि कम लेना चाहते हैं. इसका कोई मेरा प्रश्न है कि इसका कोई ऐसा आसान तरीका है इसको आसानी से निकाला जा सके और समय कम लगे? हाँ, नो, ये कोडो चावल का जेनेटिक मेकअप यही है कि 4 महीने लगता है, वो लगना ही है. डोंट ट्राई टू शॉर्टन द क्रॉप एज. सही सुपोषण जब भी मिलता है जब नेचुरल तरीका से हम उगा सके. डोंट ट्राई टू मेडल विद इट, एंड कुपोषण हो जाता है इफ यू ट्राई टू मिडल विद इट. तो कोडो चावल बहुत जरूरी है हमारा खून और मूल मज्ज को, बोन मैरो को शुद्ध करने में. सो कोडो चावल इज अ वंडरफुल आदि बीज है. इट्स एक्चुअली कॉल्ड आर्का इन आवर लैंग्वेज. आदि बीज सूर्य भगवान का नाम पे है वो. सो यू हैव टू ग्रो, इट टेक्स 4 months. और ब्राउन टॉप तो 2 महीने में आ सकता है आपको. कुटकी हरा सावा ये within 3 months बनता है. You get 3 months. So brown top in 60 to 70 days. कोडो चावल 120 days. Foxtail millet, barnyard millet, and little millet in 90 days. So there are variations, and you need to keep that in mind. That much time you have to give, and you can easily dehusk, and the research has to be done, and the experts have to work out the technique, and all that we have done. We have actually a single woman in a tribal area can dehusk with a very small instrument. We have already put up in the YouTube all that details. You can go through, and everyone can grow and make rice in their own house and eat. In the single woman also can do per day. She can produce 15 kilos of this palatable rice can be made without losing any nutrition. Dr. Vali, there are many questions also on the chat. So one by one, I will read them. There are quite a few, so we will need to go quickly. You answer another 3-4 questions. I have to go back to my clinic, and I think you can send me. We can have a discussion one-on-one. I will answer you. You can pass on that. Sure. So people want a link where they can know more about millets and the millet-based diets. They want recipes. I have already sent them the book, a big book like Shri Jagat, 150 pages. Everything about millets is answered in that book. If you read that book, everything is. And I have also sent a cookbook, how to cook everything in different items, North Indian, South Indian, sabka sab hai. And you can
cook and eat. Every information is given in the PDF, which I have already sent to Pratibha Madam. We have tried to upload here also some of the PDF. Yes. We'll try to send it to all the participants, the PDFs. Yeah. Yes, yes. Another question is, where can we get seeds for growing the millets in our area? Yeah, anywhere you can come to Mysore, we'll supply you in kilo basis or even ton. If you want 1 ton of, you can contact us. We will be able to give you the seed. So Right now, it should be available everywhere. As people get the seeds, they can grow and then supply to us. So people are asking, millet उगाने के लिए मार्गदर्शन एवं बीज वगैरह कैसे और कहाँ से मिलेंगे? I have already sent a book on jungle कृषि, how to farm. वो भी हम भेजा है और एक बार भेजेंगे. You can circulate. We have trained in South for a long time, for 5-10 years, thousands of farmers. So it's not very difficult. It's very easy. Another question is, if I start a complete millet diet for my child, will taking rice or wheat meal once in a while hinder the health of the child for type 1 diabetes? Of course, certainly helps not taking rice and wheat, but it is not going to kill him. But you better avoid it so that he becomes completely healthy. That is the basis of disease. By eating rice and wheat only, we have made these kinds of diseases in the last 50 years. See, we are actually killing the beta cells of pancreas by our food. While the baby is in the tummy itself, we are creating these genetic differences. And so we can correct that by this millet. So that means even the genetic manipulations that we have done in the baby can be reversed by the fiber of this wonderful grain. So why do you want to make them eat rice and wheat again? And of course, we need wellness centers where we train a group of, say, 150 juvenile diabetes cases. So they grow together. All these things are socially, we have to train ourselves. I agree your question, because if he is living independently with other kids who are eating cake and pizza, he also wants to eat that. I understand. But right now we are in such a bad condition that kids have to get out of their diseased condition. They better not to eat rice and wheat, and it is our job socially as parents and then so-called experts and civil society, we create a good atmosphere for these unlucky kids to get out of their diseased condition soon. Dr. Vali, there's a question. What are the major challenges in millet production? According to me, there is no major challenge. It's only the policy making bodies have to, because there is no need for water, no need for fertilizers, no need for pesticides. It is just that you have to create a demand. So what is the biggest challenge? The farmers grow, but no one takes it. And that is the challenge. So we start eating millets and create demand, and there is no challenge at all. So it is the people who have to eat change, and that is the biggest challenge. Nothing else. एक क्वेश्चन है, कुछ खेत में कोदो मिलेट में नशा या पॉइजन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन है? No. There is no poison. It is because the harvesting time, because of the lengthy period of its crop, when you harvest, there should not be rain. If there is rain, the grain attracts particular fungi, and that's what people think is poison. That's the grain itself is not poison, and that can happen to even your wheat or rice also. But people don't recognize that because we are using too much of pesticides, too much fungicides in these two crops, that rice and wheat. So no one has got any experience of that kind of poisoning. Whereas Kodo Chawal, people who grow are very less as of now. And because of its lengthy
period of 120 days, there can be rain in some places, some local areas when they are harvesting, and that can breed some fungal infections, and that's what is the reason. Just like aflatoxins in your groundnut, that is the reason why we have eliminated groundnut oil. You should eat this and all. So these are the kinds of misconceptions we are having. And on top of it, even if you have that kind of kodo rice, if you find that it is poisonous or causing some problem, you can just negate it by cooking along with methi seeds, fenugreek seeds. If you put one fistful in 1 kilo cooked rice, that problem is not there. One question is, what exactly is the role of millets in controlling diabetes? It releases glucose slowly and steadily into your bloodstream, eliminating the imbalance of glucose. Over a period of 30 days, you can get back to your glucose balance. And that's how we cure it. There's a question on productivity per acre. Is that a big challenge? And with the reducing... Not at all. Absolutely not at all, because now we have 90 acres not being used out of 100 acres. So each acre producing 10 quintals, you have 900 quintals total production. 1 quintal can be eaten, 1 kilo by 10 people consume. Unlike rice, 1 kilo is 5 people consumption. So this quintal to quintal comparison, even if you produce 20 quintals per acre with your rice, you are only going to produce 15 into 20, 300 quintals. With all your dams, pesticides, fertilizers, so much hangama, you are only going to produce not more than 300 quintals in a 100 quintal area. Whereas 90 acres, even if 85 acres, you produce 850 quintals. Where is 850 quintals and where is 300 quintals? And 850 will become actually 1700 quintals, because the efficiency of food per kilo is twice than the rice and wheat. So there is no need for acreage yield calculations at all, because everything is food producing land, and which is free, and no one need to do anything about it. Have I answered your question? Your question is, per acre I am not getting yield. But I said there are so many acres lying free, thinking that you don't have food is a misconception as by itself. You understand my answer? So maybe the person who, I hope the question who... Yes. Yes, doctor, I got the point. Only thing is, like, when you're saying there's a lying land, which may not be true everywhere, because nowadays even the common lands are being taken up by the farmers for cultivation. So there has been encroachment. So where are those lying lands, as you are saying? Yes, sir. Anywhere there is no rain, there is no water, is the land for free to millet. See, you cannot irrigate this. All that land is meant for millet production. Oh, that way. So all rain-fed farming should go to the millets. Yeah, absolutely. So there is rain-fed lands are free for you. Come to Karnataka. Karnataka alone can produce food for the whole India. That much free land is there. No one is using, because they don't know what to do with it. Unless there is water, you cannot grow. But without water, we can grow this. Just rain, that's enough. Thank you. That is the answer. Yeah, thank you so much, doctor. So you don't need to do any research to produce high-yielding minor millet. That's going to be a disastrous path again by the so-called experts. No, so the agenda is also nowadays doubling the income of the farmers. So why don't that is you also double one the income angle of which the farmers giving the free land? So one question is, what is the cost efficiency of millets? The highest in the world. There is no grain, because your cost of production is almost zero. Almost zero, just sowing and harvesting.
So, so someone has asked, what about oatmeals? Currently, these are most. That's a neutral grain. The fiber is around 4% or so, and it doesn't grow everywhere. That is another problem with oats. So for sustainable food, security of food for a country, you cannot depend on oats, cannot be grown everywhere. That is the limitation. Yeah, I think so. There are no more questions. I don't see any more questions in the chat, but I know I'm the moderator, but I have one question. Yes. So before we wind up, so my question is, can we have millets all the time? Is not a little bit of gluten also necessary for the body? Absolutely. Gluten is not necessary at all. On the contrary, it is dangerous for you. Gluten is a protein, globular protein. They are very dangerous for you. They can disturb your celiac absorbing capacity and disturb your pancreas. Absolutely, absolutely. No need for gluten. Zero necessity. Just like zero sugar. You don't need to eat sugar. You need to produce sugar in your body. So, Dr. Khadar, for how long have you been on millets and only millet diet? Quite long. 15 years or so. Only millets? Yeah, now and then when you go out, when you don't get food, I still try to fast. I don't eat rice and wheat. But then if I'm on a tour for 7 days, 8 days, sometimes you may have to eat rice. Thank you so much. Rare. Thank you so much, Dr. Vali. So I think there are no more questions. Are there any some last questions? If people have any, Dr. Vali may be able to reply quickly. Yeah. No, what I suggest is you can have a next session with all your questions. We can chat for some more time. Let's close it now. Yes. So now, thank you, Dr. Khadar Vali, and thank you, Nivedita, for your moderation. I think today was really a power talk, and we are so grateful for the Millet Men to help all of us to understand and have so much of interest in this subject now, to eat millet, to know more about millet, and also help others to understand the what you call our Paramparik Sanskritik Ahar, what you said very rightly. While listening you, I was also like feeling that, we are such a situation there. Everybody's healthy, like the way you were explaining. It was so simple. So I think it was very powerful session today. We are very thankful to you, sir, for आपने इतनी सरलता से हमको इस विषय से जोड़ा है और इस विषय में रुचि जगाई है. हम लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे. would like to request you that अभी हमारा शायद नॉलेज पूरा नहीं हो पाया है. हम शायद इस विषय को और जानना चाहेंगे. आपकी मेंटरशिप में हमारे साथ अभी आज बहुत सारे CSOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जुड़े हैं. मुझे ऐसा पता है कि भारत के बहुत सारे राज्यों से यहाँ पे आज कुछ हमारे NGOs के साथी हैं. मध्य प्रदेश के WCD महिला बाल विकास विभाग के बहुत सारे अधिकारी इस मीटिंग में हैं, कॉल में हैं. तो हम सबका इंटरेस्ट होगा कि आपकी मदद से हम मिलेट्स को और जानें. हम जैसे आपने बहुत सरल रूप से कहा कि 5 जो बीज हैं, जो हमारे लिए एक जीवन बीज हैं, उनको हम कैसे अपना सकते हैं, उनको हम कैसे अपने किसान भाइयों को उगाने के लिए तैयार कर सकते हैं. और जैसे आपने कहा कि हम अपने घरों में इसको अपने लिए फूड सफिशिएंट अपने आप को बना सकते हैं, तो इसको हम आपसे और सीखना चाहेंगे, हम आपसे और समझना चाहेंगे. और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे अभी हमारे महिला बाल विकास से जॉइंट डायरेक्टर श्री तोमर सर ने भी ये बात रखी थी शुरुआत में कि हम आपके साथ और इस तरह के वर्कशॉप्स भी करना चाहेंगे. आपको हम ग्राउंड पे भी बुलाना चाहेंगे, जिसमें हम महिला समूहों के साथ, हमारे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं, उनके साथ भी इस विषय पे हम काम करना चाहेंगे. और ये डायलॉग आपके साथ निरंतर कैसे रह सके, उसकी हम योजना बनाना चाहेंगे. तो आपको हम सबकी तरफ से, खास तौर पे ये पावर टॉक का ऑर्गेनाइज करने की जो टीम है, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और आई लुक फॉरवर्ड दैट वी विल हैव मोर सेशंस लाइक दिस इन कमिंग डेज.
I take this opportunity to also thank the Department of Women and Child Development, who joined us in actually taking this power talk at scale today. I also thank our partner Vikas Samvad for organizing it so effectively. Thank you, Shreya, for all your hard work, and also thank our colleague partner, our collaboration partner BhoomiKa, Welthungerhilfe's partner BhoomiKa, for joining us on millet promotion in India. So we look forward to all of you to continue this millet awareness, consumption of millets, as Dr. Vali had said very nicely. We will also try to share all the material which Dr. Khadar Vali has shared with us to all of you. And in case if you don't get, we will share an email ID with you today, so you can access to us. We will provide you all the material. So thank you everyone. हम सब स्वस्थ रहें, हम सब सुपोषित रहें, ऐसी शुभकामना के साथ नेक्स्ट पावर टॉक सेशन के लिए हम आपको फिर सूचित करेंगे. Thank you.